The start of the new day as we continue our spiritual sojourn in Ayodhya, which lies in the Indian state of Uttar Pradesh. Ayodhya, where they say epic Ramayana begins and ends. Ayodhya, the land where natives and devotees live and breathe every word of their Lord Ram. Where every temple and palace is replete with legends and tales from the epic Ramayana. Once again, welcome to the legendary Ayodhya. Indeed, one of the prominent pilgrimage towns for Hindus of India. Almost every monument here is a leaf out of the lives of Lord Ram and his wife Sita. Besides stories of saints and poets who have immortalized Ramayana. Every nook and corner and every lane, every ruin-like structure here speaks of old world charm. We continued our endless walks and talks, gazing at palaces amidst natives and pilgrims breaking sporadically into chants of Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Jai Shri Ram! 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 As flavors of the streets of Ayodhya and its interiors lured me, the nooks and corners ooze faith and devotion. The small shrines in some lost lane you cannot help but notice as old monuments beckoned me. I moved on with my team to explore this ancient city where everything and anything is filled with lore. My companions in this journey, as I narrate, were two disciples from Ram Gulela Ashram or monastery, Vishwanath and Yogendra, as well as monk Prabhudas of Dashrath Mahal. They tell me that despite the town's great age, there are magnificent surviving monuments of antiquity, which fascinated me to no end. So together, we set out once again to explore more and get you yet another story from the very heart of Ayodhya in the Indian state of Uttar Pradesh. राम जी हैं, उन जैसा बलवान कौन, उन जैसा करुणामय भगवान कौन? राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद. Exploring another episode from Ramayana, flipping another page of ancient history, it was now time to move slightly in the outskirts of Ayodhya. Traveled a little far, 15 kilometers north of Ayodhya. And here we are, another Dham or divine abode, which epitomizes the very origin of Lord Ram. No story of Ram is complete without this place. On the banks of river Manorama, nestled in this Basti district of Uttar Pradesh, around 25 kilometers away from Ayodhya, we have reached this place, Makhoda Dham. Makhoda Dham is the very origin of Lord Ram, and any story which is related to epic Ramayana, any story which emanates from epic Ramayana is incomplete without the mention of Makhoda Dham. Retracing the civilizational footprints and also narrating the story of Ayodhya, Makhoda Dham holds the most highest significance because this is the very place from which it all started.
This is Hariya Tehsil in Basti district of Uttar Pradesh, where Makhora Dham is situated on the banks of Manorama river. King Dashrath performed yagya or offering or worship in front of sacred fire in this fire pit. The ritual was called Putrika Meshti. This is the very Havan Kund. The legend goes that King Dashrath performed yagya or special worship ritual on the advice of sage Vashishta, after which Lord Ram and his brothers Shatrughan, Lakshman and Bharat were born. And that is exactly what makes this place, the Makhora Dham, highly revered and the most ancient of the temples in the Ayodhya city. हमें इस पूरे जहाँ पे हम बैठे हैं उसकी विशेषता के बारे में बताएं। इस भूमि का नाम है मखौरा धाम। इस मखौरा धाम क्यों बोला जाता है नाम? मख माने जो है यज्ञ होता है। तो इसी जगह पे जब दशरथ जी महाराज के पास जब कोई पुत्र नहीं था तो चौथे पन में दशरथ जी महाराज ने इसी भूमि पे पुत्रेष्टि कामय यज्ञ किए थे। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि जी, दशरथ जी महाराज, वशिष्ठ जी सब ऋषि मुनि आकर यहाँ पे यज्ञ आहुति हवन किए तो अग्निदेव हब लेके प्रकट हुए थे। हब माने जो है खीर बोला जाता है। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। माता जी को गर्भवती रहा। अयोध्या दशरथ जी के आंगन में राम चारों भैयन का अवतार हुआ यानी जन्म। 12 वर्ष के लिए यहाँ पे श्री सीताराम नाम धुन चल रहा है। 24 घंटा के लिए यहाँ चलते हुए आ रहा है अभी तक। जो लोग अयोध्या आएंगे वो पुनः जो है फिर यहाँ पे मखौरा धाम में भी आएंगे, क्योंकि कहा गया है कि जब तक ले जो है मखौरा धाम नहीं आएंगे तब तक ले कोई मतलब जो है मनोकामना नहीं हो पूरा हो पाएगा। हरे अम्मा सहस्रशीर्घ मुरग सहस्राक्षः सहस्रपादः शवमेघं स्रवत स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं पुरग एवेदगुं स्रवं विद्भूतं तः शुभं यावानो विदधे कुचमयः अग्निजीवा मनवा सूरजिष्यो विषेणु देवाय। As the priest Abhijit Das takes us through its histories and legends, he tells us that pilgrims come in droves here from across the country to offer prayers. We came across one such group of pilgrims who had travelled all the way from Maharashtra. अभी भी इस युग में इतने लोगों का यहाँ आना जाना, इतने श्रद्धा, ऐसी क्या खास बात है इस जगह? ये क्या है, ये अयोध्या जी पुरी है, ये सबसे सप्त पुरी में से प्रथम मोक्ष की पुरी है ये अयोध्या जी, जो यहाँ के लोग बोलते अयोध्या जी, उसके बारे में आप क्या कहें? अयोध्या तो बहुत अच्छी लगती है। और राम का, आत्मा राम का वो गांव है, वो उनका वहाँ जन्म स्थल हो गया वाला है। और राजा दशरथ जी सब ये भूमि के ये सबके ये राजा थे, उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किए वाला है। मखौरा धाम की जहाँ पे हम हैं अभी अयोध्या में बहुत बहुत अच्छी मान्यता है। हाँ, बहुत अच्छी है। ये राजा दशरथ को जो बाल बच्चे नहीं होते थे ना, तो इसलिए सरंग ऋषि ने बोला था कि इसलिए उन्होंने ये मनोरमा नाम की नदी है यहाँ आके नाना उना किया। और वो सब ऋषि मुनि ब्राह्मण बुला के उन्होंने यहाँ यज्ञ किए वाला ये यज्ञ ठिकाना है। इसलिए हम भी सब जनों को दिखाने क्यों लाते हैं। तो अब कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि अयोध्या के मन में राम है, अयोध्या की आत्मा में राम है। अयोध्या में सभी तरफ भी राम है। जिस तरफ हमारी सीता माता है, हम राम के भक्त, उनकी पत्नी है, हमारे हनुमान जी है, वो ही राम के भक्त है। वो तो सबसे उन्होंने बड़ी भक्ति की वाली है हनुमान जी ने। अरे फाड़ून आपली छाती दाविले प्रभु भगवान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान। I think that sums it up. In the praise of Lord Ram and Hanuman, they suddenly break into this Marathi folklore which only speaks volumes of their faith in Lord Ram. हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
in the praises of Lord Ram and his wife Sita, or Mata Sita, or Mother Sita. Shri Sita Ram Nam Kirtan, this is what they call it. And the legend goes that since time immemorial, the singing in the praises and these hymns continue for 24/7. 24/7. They operate in multiple shifts. They take turns. But Sita Ram, praises and hymns in the praises of Sita Ram, Lord Ram and Sita, never stop. ये जो राम नाम संकीर्तन चल रहा है, ये हमारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज ने अपने हाथों में जो है 12 वर्ष के लिए संकल्प लिए हैं, जो 4 वर्ष पूरा हो चुका है, 5वां वर्ष अभी चल रहा है। कंटिन्यू जो है दिनों रात चलते रहता है 12 वर्ष के लिए। संकल्प में क्या था कि क्यों ये संकल्प किस चीज़ के लिए लिया गया था? ये संकल्प इसलिए लिए क्योंकि राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में जो है हमारे स्वामी जी ने इस राम नाम संकीर्तन का संकल्प लिया, क्योंकि बताया कि जो है बहुत दिन से जो है राम जन्मभूमि का जो है लाफड़ा चल रहा था। जब तक ले जो है यहाँ जो है मतलब राम नाम संकीर्तन नहीं चल पाएगा, तब तक ले जो है वहाँ पे जो है राम जन्मभूमि का जो है फैसला नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो है जिस तरह अयोध्या हनुमानगढ़ी में दशरथ महल में राम नाम संकीर्तन चल रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी चलना चाहिए। तो महाराज जी ने हमारे संकल्प लिए। आज जो है यहाँ 4 वर्ष पूरा होने के बावजूद में जो है वहाँ राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन हो गया। राम जन्मभूमि का भी जो है मंदिर तैयार हो गया। कुछ जो है 22 जनवरी को राम जन्मभूमि का भी जो है भगवान स्थापना हो जाएंगे। From Ayodhya Dham, we set course for yet another ancient temple with numerous fascinating legends associated with it. Just about 4 kilometers from the main Ayodhya town. This is Kamiganj, which boasts of having Mani Parvat, another ancient structure with great religious significance. This is another chapter where divine meets divinity in Ayodhya. This is Mani Parvat. We have reached Mani Parvat around 3 kilometers away from Ayodhya. 65 feet above sea level is what they say. Mani means gems and Parvat means hillock. In fact, this also happens to be one of the most popular, revered places of religious places of significance in Ayodhya. And this Mani Parvat also derives its spiritual eminence as far as various legends and stories of Lord Rama, his marriage, his wife Sita, and various stories emanating from epic Ramayana is concerned. मणि पर्वत धाम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव। Our companion storytellers, Monk Prabhudas and 2 disciples, Yogendra and Vishwanath, continued to connect the dots of civilizational footprints spread across Ayodhya, adding layers to our understanding and absorbing of the spiritual energy here. ये वो स्थल है जब मां जानकी जी विवाह होकर श्री अयोध्या जी पधारी तो अपार धन वैभव ऐश्वर्य दिया श्री जनक जी महाराज ने कि हमारी बिटिया खूब सुख समृद्ध रहेगी, इसको धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। ये वो मणि पर्वत है जैसे पर्वत रूप में आप यहाँ देख रही हैं। ये कभी राम जी के समय में अभी भी हीरे मोती मणि मौलिक जमारात ये सब बड़े बड़े वाहनों में यंत्रों में भर करके आए थे, तो यहाँ पे सब खाली कर दिए गए, तो ये पहाड़ का रूप ले लिया। यानी पहाड़ इतना दिया जनक जी महाराज ने कि यहाँ हीरे मोती मणि माणिक सोना चांदी सब पहाड़ के रूप में भर गया, तो तब से यहाँ का नाम पड़ गया मणि पर्वत। Mani Parvat in Ayodhya is a divine hill made originally of the gems that were brought from Janakpur following the marriage ceremony of Lord Ram and his brothers. The word Mani implies gem and Parvat means a hillock. And the legend also goes that this place is known as Leela Sthali of Sita Devi, Sita, the wife of Lord Ram.
हे राम तेरा नाम मैं जपूं सुबह शाम, हे राम तेरा नाम मैं जपूं सुबह शाम। Absorbing lot of stories of bygone era, we set course back to Ayodhya town along the banks of Saryu. We couldn't help but admire the pristine waters sparkling under the gleam of setting sun. Making way back into the town, we landed at Ram Janmabhoomi Nyas Karyashala or workshop, one of the makeshift workshops spearheading the chiseling of stones for the construction and use in magnificent Ram Janmabhoomi temple. These are stone carving artists specially roped in from Rajasthan, involved in intricate designs, responsible for converting huge boulders of stones into pillars that are going to adorn the sanctum sanctorum of Ram Mandir here in Ayodhya. We are here at Sri Ram Janmabhoomi Nyas Mandir Nirman Karyashala, basically a stone cutting workshop where these artists are painstakingly, with lot of patience and also lot of love in their hearts for Lord Ram, engrossed in the job that is cut out for them. These are artisans infusing life in these stone slabs lying there in hundreds and meant to be part of Ram temple. They are no ordinary artisans. They feel blessed for this connect with their Lord Ram and with the Ram temple. Thus they feel they are part of the history in making. हम पिलर का काम कर रहे हैं और जो पिलर जो भी काम चल रहा है उसमें पिलर थोड़ा अलग अलग नक्शों के हिसाब से डिज़ाइन है, स्टेप टू डिज़ाइन है। ये पत्थर राजस्थान का है, बंसीपाल पत्थर है। ये मंदिर राम मंदिर में पिलर का काम करेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान का मंदिर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। राम जी ने बुलाया इसीलिए आ गए। तो यहाँ किसको मिलता है जगह काम करने के लिए। Lal Chandra Kataria tells me that he feels absolutely fortunate and he feels absolutely blessed. He says God has chosen him, Lord Ram, since he's a big devout of Lord Ram. मोदी जी नो हारो काम से એટલે અમે અહીં સેવા કરવા આવી ગયા રામચંદ્ર ભગવાનની. Parveen Bhai is telling me that from the core of his heart, this is his way of giving seva or his services to his deity, which also happens to be Lord Ram. He is one like many other artists who have come from different parts of the country for this purpose, the very sole purpose of infusing life into these otherwise plain boulders or blocks of stone, and after their Midas touch, this turns into beautifully, intricately carved stone pillars which will be adorning the walls, the floors, the different floors of Ram temple in Ayodhya. The day was drawing to close, so was our story, we thought. We were wrong. At the backyard of the Dashrath Bhavan was site awaiting us. Site representative of Mother Earth and nourishment. Gaushala or cowshed. Here we were, and I am told that this very space occupied by cow is nothing less than a holy ground. In Hindu mythology, cows have a very special significance, and they have also been given the status of, or elevated to the status of Mother Goddess. Talking about Ayodhya, there are at least, or in fact more than 1,000 cowsheds here in Ayodhya itself. And talking about the Dashrath Mahal complex, which houses more than 10 such cowsheds. In fact, it is also believed, it is also believed to be the earthly representatives of the divine and nourishing Mother Goddess, who also represents fertility and bountifulness.
Lord Krishna's often associated with cows. Hindu mythology, in fact, accords extreme respect to this animal, cow, and is regarded as the representative of Mother Goddess. The word go means cow in Sanskrit. Thus, Go Puja means worship of the cow. And the cow worship is an important worship procedure in Hinduism. But to understand it further, and especially its significance when it comes to Ayodhya, when it comes to epic Ramayana, when it comes to the era of Lord Ram or the life and times of Lord Rama in Indian mythology, in Hinduism, we will try and understand that as well. So, गौशाला, गौ माता, ये जो हमारे धर्म में जो इसकी मान्यता और प्रतिष्ठा है, उसके बारे में बताइए। गौ माता स्तंभ है, धर्म का स्तंभ है गौ माता, क्योंकि गौ माता ही एक ऐसा रूप है जिसमें आप संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा कर सकते हैं। आप देखेंगे गोविंद का नाम, गोपाल का नाम ही एक पड़ा गौ का पालन करने से। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैयाएं थीं, 9 लाख गैया होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण गोविंद जो है गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम स्नेह की बात है। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यामे, ताहि अहीर की छोहरियाँ छचियावर छाछ पे नाच नचामे। इसलिए गौ की सेवा स्तुति है। श्रीमतीभ्या गोभ्या, यानी विश्वस्य गावो विश्वस्य मातरः, मातना सर्वभूतानाम। एक जननी होती है, वो अपने 1, 2, 4 शिशुओं को पालती है, और गौ तो जगत जननी है जो सारे विश्व का पालन भरण पोषण करती है। आप देखें उसके गोबर से आप कोई सांस्कृतिक कार्य करें तो उसमें आप देखें कि गोबर से प्रथम पूजन गौरी गणेश का होता है। आप देखें आज भी गृह काज में कहीं भी पहले गौ के गोबर से लेपन होता है। आप कहीं भी देखें, अगर पंचामृत सर्व संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में पंचामृत सबसे पुण्य और सबसे पावरफुल माना गया है। पंचामृत, जिसका पंचामृत बनता है वो गौ का ही बनता है। गौ के दूध का दही, घी, दूध, शहद ये मिला करके शर्करा, ये पंचामृत बनता है। इसलिए गौ माता ही एक ऐसे देव हैं जो धर्म का 4 स्तंभ है, जिसमें गौ माता एक स्तंभ है जो कि सारे जगत का भरण पोषण पालन करती हैं। इसलिए मैं तो सभी भाई बहनों से, सभी देशवासियों से ये आग्रह करूंगा कि सभी को गौ माँ की सेवा करनी चाहिए। Captured these monuments, temples and palaces, from vibrant markets where every lane bursts into rich hues to this temple town's antique feel filled with devotion and faith. Ayodhya's mystical essence was inexplicable. The day was coming to close, hence curtains down for our tales from Ayodhya. The sun had set and it was the time for Saryu Aarti. Holy Saryu River, it is believed that finally takes Lord Ram with it to his heavenly abode as he entered his Jal Samadhi. Located on the east bank of River Saryu, I welcome you to Ayodhya Dham. Brimming with the remnants of the bygone era, brimming with its ancient vibe since eternity, which will stay till eternity. My endless walks and talks culminate into this realization that Ayodhya Dham's antiquity is unmatched. Outstanding panorama of line of temples in floodlit night. Ayodhya stands tall as beacon of spirituality, marching towards Navyata, Divyata, Bhavyata, which means marching towards the newness, the divinity and the grandeur of Ayodhya Dham, abode of Lord Ram.
जपूं सुबह शाम हे राम तेरा नाम मैं जपूं